Child labor is an evil practice that deprives helpless kids of their childhoods and their chances for a brighter future. Millions are impacted globally by this hidden pandemic. Child labor has a long history. It first appeared during the Industrial Revolution when poor families sent their kids to work. This exploitation was sustained by the rising industrialization and the need of inexpensive labor. मैं मेहनत करता हूँ, ये सब्जियाँ बेचता हूँ। टेलर का करते हो? हम शर्ट पर सेल करते हैं। अच्छा कर रहे हो? फलियाँ बेच रहा हूँ। सब्जी का काम। सब्जी का काम। मुझे हो गए हैं 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने 3 साल से। कर रहे हो आप? काफी दिन से कर रहे हैं। 5 साल हो गए। साल हो गए। मैं मेहनत करता हूँ अपने बाबा के साथ। ये इतनी महंगाई हो गई है, यहाँ पर काम करने पैसे की वजह। हाँ जी, हालात ही मजबूरी है करने का ज्यादा। घर दे देता हूँ। माल मंगाते हैं, फिर बेचते हैं। पापा को देते हैं। अच्छा फील होता है कि असी भी स्कूल जाइए, कि पढ़िए लिखिए, कारोबार ठीक होए, काम करने की लोड़ ही नहीं है। बिल्कुल। सबसे पहले तो चाइल्ड लेबर जो मेरे ओपिनियन ये है कि लाइक वी हैव द किड्स और हम उनको जो है वो अपनी लाइवलीहुड को मेंटेन करने के लिए बेसिकली हम उनको बाहर काम पे भेजते हैं। तो ये चाइल्ड जो है लेबर है, जैसे कि वो आप वर्कशॉप्स पे देखते हैं छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, स्टोर्स पे काम कर रहे होते हैं। हम उनको एजुकेशन में भेजने के बजाय बेसिकली हम उनसे वर्क करवाते हैं और फिर जो थोड़ा बहुत वो एक तो स्किल भी वो डेफिनेटली सीख रहे होते हैं, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी इतनी है कि लाइवलीहुड को मैनेज करने के लिए एक बंदे की इनकम काफ़ी नहीं है। तो इस वजह से जो है वो ये बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर और आप हर जगह देखते हैं। इवन कि आप तो एक और बहुत अजीब सा सिस्टम पाकिस्तान में स्टार्ट है जिसमें वो बेगर्स जो हैं वो चाइल्ड एज अ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो फैमिलीज़ के साथ काम कर रहे हैं और उनके पूरे गैंग्स हैं, उनके ग्रुप्स हैं। तो अब पहले ये था कि इट वाज लाइक काइंड ऑफ कि ये उनकी मजबूरी थी कुछ फैमिलीज़ की। अब लोगों ने इसको एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट कर लिया हुआ है। तो ये है मेरी नज़र में जो है चाइल्ड लेबर है। देखिए ज़हरी, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान इज़ फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स राइट नाउ भी नहीं कहेंगे, बल्कि जब से पाकिस्तान बना है यहाँ पे मसले मसाइल हैं और वो इवन कि वो बढ़ते जा रहे हैं। तो जो हमारे पास सबसे पाकिस्तान का बड़ा इशू है वो है पाकिस्तान की जो है एक्सपोर्ट्स नहीं है। जब एक्सपोर्ट्स नहीं है तो हमारे लोग, हमारा कंट्री बहुत डिपेंडेंट है दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर। यहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन की जो डेली की इनकम है, डेली वेजेस जो हैं वो डिफाइंड हैं, अगर तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। ठीक है, और इस वजह से ये है कि अब कंट्री के अंदर जो है वो गुर्बत इतनी बढ़ चुकी है कि अब लोगों की जो इनकम है और जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो मीट नहीं कर पा रहे। अभी हमारे पास है ही कुछ नहीं, तो बच्चों की स्कूल की फीस कहाँ से भरें, कपड़े कहाँ से लेके दें, चप्पलें कहाँ से लेके दें। बंदे के पास 2-4 आने पैसे होते हैं, बंदा स्कूल बच्चों को भेजता है। हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनकी एजुकेशन है, उनकी जो सिक्योरिटी है, या एक कॉमन पर्सन को अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इन वजूहात से जो है बेसिकली जो है वो लोग अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, इन अपने चाइल्ड्स को यूज़ करते हैं, अपने बच्चों को यूज़ करते हैं इनकम जनरेशन मॉडल के तौर पे। और उनमें अवेयरनेस भी नहीं है पहली बात ये। इवन कि कुछ लोग हैं ऐसे, लाइक आई हैव सीन सो मेनी पीपल्स जो दे आर नॉट दैट स्टेबल बट स्टिल दे आर नॉट पुटिंग देयर चिल्ड्रन इनटू दिस प्रोफेशन। तो ये कि अब इसमें ना दो मेजर, एक तो मेजर वजह है कि पॉवर्टी है, दूसरा अवेयरनेस भी नहीं है। अवेयरनेस इस सेंस में नहीं है कि अब लोग इतने अवेयर नहीं है, वेल अवेयर नहीं है कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाना है। इवन के बच्चे, अब माँ बाप जो हैं वो कहते हैं कि हमने बच्चे को 20 साल 30 साल अगर पढ़ाना है तो इतने सालों के अंदर वो बेसिकली इतनी इनकम जनरेट कर देगा। हालांकि उनको इसकी वैल्यू का नहीं पता कि सिर्फ पढ़ाने का मकसद ये नहीं होता कि उन्होंने सिर्फ पैसे कमाने हैं। एक हमने अच्छा माशरा जो है वो बनाना है, हमने हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें करनी है। तो ये दो चीज़ें, एक तो अवेयरनेस नहीं है, एक पॉवर्टी है। तो ये दो काजेज़ हैं बेसिकली जो हमें बहुत अफेक्ट कर रही हैं।
इसमें बेसिकली दो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक हम इंडिविजुअल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो जो हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको वो बेसिकली इम्प्लीमेंट करवाएं, ठीक है, ताकि जो एक कॉमन पर्सन के इश्यूज हैं वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन एंड सिक्योरिटी। तो अगर वो गवर्नमेंट की तरफ से उनको ये चीज़ें मिलेंगी, स्टेट की तरफ से मिलेंगी, तो ज़ाहिर बात है दे विल जस्ट फोकस ऑन द स्टडीज़ एंड अदर स्टफ। तो एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी हम इंडिविजुअल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम इंडिविजुअल्स की बात सिर्फ पेरेंट्स नहीं है, लाइक सोसाइटी के दूसरे लोग भी हैं, ठीक है। बेसिकली इन लोगों ने भी उनको अवेयर करवाना है, उनको एक्सपोजर देना है कि तालीम जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। बच्चों को बजाय इसकी कि आप लेबर वर्क कराएं, उनकी तालीम पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। तो ये हम लोगों ने, और दूसरा हमने उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, ठीक है। ये दो तीन चीज़ें अगर हम अडॉप्ट कर लें तो आई थिंक दिस कैन बी रिड्यूस्ड और इवन दिस कैन बी फिनिश्ड, राइट। Child labor to begin with is an abomination. Like, straightforward, there is no defense. And its effects on children are adverse, to say the quiet. Because children in their developmental stage, they require nurturing, they require love, care, and child labor is the worst kind of abuse you can inflict on a child. If I say child labor, I will say one line: child labor is a curse. Definitely I am against child labor, because you can see that children are the raw material of the future of a country. So if we force them to do labor, that is definitely wrong. So I am against it. Actually, all forms of child labor are worse. I mean, this is a choice between bad and worse, if you ask me. But yeah, you could start with children working in dangerous factories like the labor ones, and more specifically the chemical factories. We see that 12-year-olds are handling dangerous chemicals, and these chemicals are clearly marked with hazard. So hazardous chemicals, and those in the hands of 12-year-old. And worst thing is that they don't even have protective goggles and everything. So that, I think, is life dangerous, and that is cruelty, savage cruelty. Illiteracy, because many illiterate people, there are literacy campaigns going on, I'm not going to lie, but what happens is that they, instead of putting their children to schools and colleges, they said let's earn, and the families, there are 13 people in a family. So at the earliest convenient stage, they put them to factories. That is the reason. I will tell you that Pakistan, is a poor country. Our economy is not stable, so that there are many people who are living hand to mouth. So they force their childs to do labor to live, to feed their bread. If you want to prevent child labor, first of all, you have to give education. You have to give awareness to all of the people that child labor is definitely a curse. Then you have to government should make policies. There should be a strict law that child labor, the person who forced the children should be punished, and he will be fined. आपकी नज़र में चाइल्ड लेबर कैसा है? चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग गुर्बत के हाथों तंग होकर अपने बच्चों को काम पे रखवाते हैं, मगर ये जो है ना, हम चाहते हैं उनको एजुकेशन दो, तालीम के साथ जो है ना बंदे आगे बढ़ें, बच्चे भी आगे बढ़ें, हमारे ही बच्चे हैं, चाहते हैं कि बिल्कुल वो आगे जाएं। इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं? रोकथाम के लिए हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए कुछ प्रोग्राम ऐसा लाएँ कि उनके घर की कफालत भी हो सके और बच्चे जो है तालीम भी हासिल कर सकें। The struggle against child labor presents immense challenges, but there remains a glimmer of hope. By focusing on education, raising awareness, and joining forces, we can liberate these helpless individuals from their bondage. Together, we can establish a society where every child enjoys their fundamental rights to a childhood, education, and a bright future. It is essential for us to unite our efforts in addressing child labor. Let us voice our concerns, support organizations tirelessly working to tackle this issue, and advocate for stricter laws and regulations. Through collective action, we can put an end to child labor and create a future filled with hope for all children.